Ji, Bismillah Rahman Rahim. Today we'll talk about nutrient uptake and transport. As you already know that in previous lecture we have discussed about the acquisition. Acquisition means to bring the nutrients in the vicinity of plant roots. That the nutrients are the ions, they are in the approach of plant roots. Uh, as well as they are in the farm which can be taken up by the plants. So we mentioned that there are three ways for the nutrient acquisition: mass flow, diffusion, and root interception. And we had also discussion on the nutrient release from the organic matter, that the mineralization from the organic matter, because the organic matter is not available to the. So that's why you need uh, the nutrients present in that organic matter in the farm, which can be taken up by the plant. So that also comes under acquisition. So it means now the nutrients from all sources, they are in the approach of the roots, and they are in the farm which can be taken up by the plant. But this is not all, because still there are many processes through which the ions will uh, will will be processed, and then they will be utilized in the photosystems. Uh, the nutrient uptake, basically, so that is from the root epidermal cells, because the root epidermal cells, so they are in the in the contact of soil. So root epidermal cells are like cells, and they have membranes from which uh, they have a different mechanism to take up nutrients. Just to introduce that, today we'll discuss about the nutrient uptake, then we'll talk about plant cell. We will also discuss some uptake pathways. Where we will have symplastic and apoplastic pathways, then nutrient entry into the symplast. There are active and passive transport. So this lecture include up till here. Then later on we will also discuss about the membrane transport, channels, carriers, and uh, ion pumps, and lastly the primary and the secondary active transport. So this all we will discuss it discuss today. Uh, by definition, the transport of nutrients across the root plasma membrane is nutrient uptake. As I mentioned earlier, that the plasma membrane or the cell membrane of root epidermal cells, they are direct in contact of soil solution or soil, and the transport of ions which are present in the soil solution or which are absorbed on the soil particles, the transport of those ions across the root plasma membrane is called as uptake. कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल सोल्यूशन से वो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो एपिडर्मल सेल्स हैं रूट के, उससे वो पास थ्रू जब हो जाती है अंदर की तरफ, सो देन वी से दैट इज अपटेक. तो इस चीज को जेन में बैठाना चाहिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अपटेक, so that means the entry of nutrients from outside to inside the cell, क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो उसमें जो बड़ी रुकावट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रुकावट भी है, लेकिन that also provide passage to the nutrients. So that we will say that how they provide passage to the nutrients. So we know that the nutrient uptake usually start at the root level, although we have some foliar applications mechanism also, but mainly the roots are responsible for nutrient uptake. Before going toward the uptake, we must know that what is the morphology of this plant cell. We have the cell wall, and cell wall we know that is very permeable, and mostly the ions or the nutrient can pass through
all kind of cell wall, and there is no such kind of barrier there. And then we have cell membrane, and which has a different mechanism to filter the entry of nutrients and other contaminants into the cell. So this is basically responsible for nutrient uptake, the efficiency of nutrient uptake, and whatever is relevant to the transfer of ions from cell to cell membrane is responsible. And other, you know that the plant cell has a big vacuole, and which is responsible for the cell turgidity as well. And also it is a storehouse of different primary and secondary metabolites. And then coming toward the left side, you can see here that there are cell membranes of two neighboring cells, and the part between two cell membrane is basically this, that is apoplastic. It means that is a space between the cell, and that also include the part of the cell wall, and also the part which the spaces which are between the cells. Like here you can see that there are some spaces between the cells. So this part is the part which is outside the cell membrane is called as apoplast, and the part which is inside the cell membrane, that is basically the cytosol and other organelles which are present in the cell. So these are called as symplast. So this here you can see V is for vacuole, and C is for cytosol, and you can W is for you say the cell wall, and these are basically the spaces. अगर आप देखें कि ये दो जो साइटोसोल्स हैं, ये जो साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है सी है, ये सी है, ये सी है, ये दोनों बेसिकली सेल का जो एक्टिव पार्ट है वो है, और ये वी जो आपको बड़ा सा नजर आ रहा है ये वैक्यूल है, और इन दोनों साइटोसोल के दरमियान, क्योंकि इसको जो कवर किया हुआ है वो सेल मेम्ब्रेन ने किया हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है दरमियान में जहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ है ये ही एपोप्लास्ट है। यहाँ पे सेल वाल भी है और जो इंटर सेलुलर स्पेसेस हैं वो भी, और ये जो ई मेंशन किया हुआ है ये एक्सटर्नल सोल्यूशन। The nutrient uptake, so that varies because the external concentration of the nutrient that is different. For example, potassium, calcium, sodium, phosphate, so they are different, and the uptake is also different because here there are two two plant species, maize and bean, and then the uptake you can see here that is also different. So I have a request to students that please don't turn on your video. अपनी वीडियो काइंडली ऑन ना करें, वीडियो आपने क्लोज ही रखें. Thank you very much. Then you can see here that this is initial concentration of the external solution, mean where the plants they grew up. After 4 days, where the maize was grown, you can see that the concentration of this solution that is 0.14. Earlier it was 2 millimolar, and then it was decreased to 0.14. But where beans were grown, here you can see that the concentration is much higher as compared to where maize was grown. It means the uptake of potassium from that initial concentration that is lower in bean and higher in maize. Similarly, you can see here that the concentration in the plant cell, if you see here in maize it is higher, while in bean it is lower. So it really correspond, ये उससे relate कर रहा है कि जो beans जहाँ पे grow हुए थे वहाँ पे
इनिशियल कंसंट्रेशन 2 से 0.67 तक आई, इसका मतलब है कि यहाँ से अपटेक कम हुई, और मेज वाले में चूंकि बहुत लोअर रह गई थी तो ये इससे अपटेक ज्यादा हुई, और यू कैन सी हियर, आप मेज में वो चीज देख सकते हैं। लेकिन ये कंसंट्रेशन जो है, ऑफ कोर्स मेज का जो प्लांट साइज है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, फिर उसकी एबिलिटी टू टेक अप न्यूट्रिएंट्स, ये उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, एंड सेम वे इन द बीन। अगर आप कैल्शियम देखें तो दैट हैज डिफरेंट सिनेरियो। यू कैन सी हियर दैट वेयर द मेज वाज ग्रोन, वहां पे 0.94 रह गया बाकी, और जहां बीन ग्रो कर रहे थे वहां पे 0.59। इसका मतलब है कि बीन्स ने कैल्शियम की अपटेक ज्यादा की है, और सिमिलरली वो उसकी कंसंट्रेशन के अंदर जो रूट में उनकी कंसंट्रेशन है उससे भी आपको जाहिर है कि बीन में कैल्शियम ज्यादा है और मेज में कम है। So it tells us the whole story is that the concentration of the nutrients in the solution and the soils that is different. The uptake ability is also different, and the requirement of different elements also different. लेकिन उनकी अपटेक जो है वो रूट के जरिए ही होती है, और वो करस्पॉन्ड करती है आपकी कंसंट्रेशन जो है वो प्लांट सेल के अंदर। तो ये उस चीज को भी सपोर्ट करता है कि जो मेजर अपटेक है वो थ्रू प्लांट रूट्स ही होती है, क्योंकि ये हम रूट के जरिए ही इसकी अपटेक करवा रहे हैं इस स्टडी के अंदर। इसी तरह आप दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी देख सकते हैं। The results obtained from both lower and higher plant demonstrate that ion uptake is characterized by selectivity. Certain mineral elements are taken up preferentially, while others are discriminated against or almost excluded. कि इसका मतलब यह है कि जो सिलेक्टिविटी है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, जो जो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज हैं उनकी डिफरेंट है, वो किसी एलिमेंट को ज्यादा टेकअप करते हैं और किसी को कम करते हैं। देन accumulation, the concentration of elements can be much higher in cell sap than in the external solution. अब उसमें भी हमने, अगर आप ये लास्ट स्लाइड देखें तो बाहर जो कंसंट्रेशन है वो है 2 मिलीमोलर, और प्लांट सेल के अंदर जो है रूट सेल के अंदर 160 मिलीमोलर। इसका मतलब है कि अगर आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निकालें तो वो तो प्लांट सेल के अंदर बहुत ज्यादा बन जाता है। तो ये आगे जाके हमें ये भी इसका पता चलेगा कि ये जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है आयंस की, तो ये दैट इज नॉट वेरी सिंपल, क्योंकि जो आपकी बाहर कंसंट्रेशन थोड़ी है और अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो लेकिन फिर भी मेज को या प्लांट्स को जरूरत है उसकी, और फिर भी अपटेक उसकी लाजमी होगी। तो इसका मतलब है कि जो मूवमेंट ऑफ आयंस है दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो वो भी एक प्रोसीजर है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इट मींस दैट इज नॉट वेरी सिंपल। There are also some distinct differences between plant species in their ion uptake characteristics and also in the genotypes. So we are still comparing here bean and maize, but there are also differences in the genotype. One genotype may take more nitrogen in the ammonical form, the other genotype may not take. So there are also species, the plant species differences, and there are also some genotypic differences. So coming toward the uptake pathways, so there are two major pathways. One is the apoplastic, and the other one is the symplastic. And there is also another that is basically transmembrane. So it means once the ions they are entered into the cytosol, so it is not necessary they pass through the plasmodesmata. तो जर्नल तो ये है कि एक दफा जब सेल मेम्ब्रेन से न्यूट्रिएंट एंटर हो जाएगा साइटोसोल के अंदर, तो वो प्लाज्मोडेस्मेटा से के जरिए एक सेल से दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, अल्टीमेटली वो जाइलम वेसल के अंदर जो है वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो जरूरी नहीं है कि प्लाज्मोडेस्मेटा, वो हो सकता है दूसरे सेल में जाने के लिए वो सेल मेम्ब्रेन का रास्ता ही अपनाए।
वो प्लाज्मोडेस्माटा से ना गुजरे। तो इसलिए ये ट्रांस मेम्ब्रेन भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो मेनली है वो सिम्प्लास्टिक है या एपोप्लास्टिक है। ये जो रेड कलर आपको नजर है, दिस इज एपोप्लास्टिक। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट एपोप्लास्टिक, क्योंकि एपोप्लास्टिक से जब एंटर हो रहा है तो उसने अल्टीमेटली साइटोसोल में या सिम्प्लास्ट में एंटर होना ही होना है। क्योंकि जब वो, अगर आप नीचे वाली ये फिगर देखें, तो जब ये लेट मी यूज दिस वन, जब वो एपोप्लास्ट के अंदर मूव करेगा तो आगे उसको कैस्पेरियन बैंड का सामना होगा। So when there is a Casparian band, it means they cannot move further. So ultimately, they will need to enter into the symplast, and using plasmodesmata, they can enter into the endodermal cell and ultimately into the xylem. So it is important because it enhances the surface area. कि अगर ये एपोप्लास्ट के अंदर इनकी मूवमेंट ना होती तो इसका मतलब जो बाहर सरफेस है वहीं से उसने एंट्री करनी है सेम प्लास्ट के अंदर। जो सेल एंड्रो जो जो एपिडर्मल सेल की बाहर वाली जो साइड है सेल मेम्ब्रेन की, सिर्फ वहां से ही एंट्री हो सकती थी अगर एपोप्लास्टिक मूवमेंट ना होती। लेकिन अब ये देखें कि ये एपोप्लास्ट के जरिए मूव कर रहा है, लेकिन वो कहीं से भी एंटर हो सकता है। वो पहले सेल के अंदर से हो सकता है, जो एपिडर्मल सेल है, या वो एंडोडर्मल सेल से भी एंटर हो सकते हैं। तो ये सरफेस एरिया जो है ये बढ़ गया। दूसरा ये है कि बहुत सारे कंटेमिनेंट्स जो हैं वो रूट्स के अंदर, क्योंकि वो जो ये एपोप्लास्ट है इसके अंदर वो रह जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो उनकी एकमुलेशन यहाँ पे रूट्स एपोप्लास्ट में हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो रूट्स हैं वो जहाँ पे कंटेमिनेटेड सॉइल हो, वो रूट्स वाली वेजिटेबल्स जो है वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि रूट्स के अंदर उसकी गमुलेशन हो जाती है। जो रूट्स हैं एपोप्लास्ट है, जो ट्यूबर है उसमें फिर भी उसकी फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन जो रूट्स हैं बेसिकली उसके अंदर उसकी जो कंटेमिनेशन है वो हाई होती है। लेकिन अगर कोई फ्रूट है, लेट्स से कि आप वहाँ पे कोई खीरा लगा हुआ है या वैसे वहाँ पे कोई टमाटो लगा हुआ है, तो वो रूट्स जब उसकी टेकअप करते हैं तो वहाँ पे कंटेमिनेंट को वो रोक देते हैं। तो इसलिए जो कंटेमिनेंट की मूवमेंट जो है वो कम होती है टुवर्ड द शूट। और ये पर्पज इसलिए भी है क्योंकि शूट के लिए वो टॉक्सिक है, तो वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। उनका जो डिटीरियोरेटिव इफेक्ट है वो उसको डिटीरियोरेट कर देगा जो प्लांट मेटाबॉलिज्म हो रहा है। So if we briefly say that if this is a root here, so there are two major roots, apoplastic root and then there is a symplastic root. तो ये जो पिछली हमने फिगर है उसको हमने कंक्लूड किया है। Influx to apoplasm, movement of low molecular weight solutes. Examples, ions, organic acid, amino acid, sugar from the external solution through the walls is a non-metabolic passive process driven by diffusion or mass flow. तो ये जो movement है that is possible through a passive transport जब वो high concentration से low concentration की तरफ जा रहा है। तो this is possible, जैसे मैंने आपको कहा कि by diffusion और by mass flow, ये हमने जो स्टार्ट में जिस तरह वो उसमें पढ़ा था उसी तरह ये सेल सेल जो जो अपटेक मैकेनिज्म है वहां पे भी ऐसे होता है कि मास फ्लो का मतलब ये है कि वो जो सॉल्यूशन टेक अप हो रहा है उसके अंदर वो हाई कंसंट्रेशन में मौजूद। The second one, the primary cell wall consists of a network of cellulose accounting about 15 to 30% of its dry weight, cross-linked glycans and glycoproteins, all embedded in the pectin matrix. So ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है, या आप देख लें कि कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके सेल वॉल के। तो इसका मतलब है कि ये जो
सेल वॉल है, ये एक जानदार चीज है। आल्दो कि ये परमिएबल है, इसमें से न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे कंटेमिनेंट पास थ्रू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर उसकी क्रॉस लिंकिंग है और उसकी जो उसके अंदर जो आप कहें सेलुलोज है, तो वो आपस के अंदर आपस में वो इंटीग्रेट किए हुए हैं। तो बोथ कैल्शियम एंड बोरान आर आल्सो इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। इसके अंदर अब बोरान भी होता है और कैल्शियम भी होता है। तो बेसिकली ये जो कैल्शियम और बोरान है, ये इनकी बॉन्डिंग करते हैं, इसको स्ट्रेंथन करते हैं, जो सेल वॉल की स्ट्रेंथनिंग है वो इससे। तो ये जो मूवमेंट है थ्रू सेल वॉल, ये तो पैसिव है, और इसलिए पैसिव है कि यहाँ पे जो फिल्टर है वो ज्यादा नहीं है। आल दो कि देर उसका स्ट्रक्चर है पूरा, लेकिन आप समझें कि वो छन्नी है जिसके सुराख जो है रिलेटिवली मोटे हैं एज कंपेयर टू सैल्मन। The maximum diameter for the pores in plant cell walls are generally 5 nanometer. The diameter of hydrated ion is very small. However, higher molecular weight solutes or viruses and other pathogens through one cell walls is severely restricted. एंड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो राइजोडर्मल सेल वॉल है उसका जो डायमीटर है वो 500 से 3000 नैनोमीटर तक है। जो कार्टिकल सेल वॉल है उसका 100 से 200 है, और जो जो पोर्स इन सेल वॉल हैं उसका लेस देन 5 है। और जो हाइड्रेटेड आयंस अगर आप देखें उसका 0.66 है। इसका मतलब है जो आयंस हैं हमारे या सुक्रोज के मालिक वो बहुत छोटे हैं। अकॉर्डिंगली देयर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अब ये भी जो सेल वॉल के अंदर हैं, एक्ट एज ए कैटायन एक्सचेंजर इन सेल वॉल continuum of roots and other plant tissues, so called एपोप्लाज्म। ये एपोप्लाज्म है बेसिकली। उसके अंदर जो है वो ये कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं जो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो एक्सचेंजर के तौर पे भी होते हैं कि अगर लेट से पोटेशियम या कैल्शियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आ, उसके साथ एब्सॉर्ब हो जाते हैं। इन रूट्स कैटायंस फ्रॉम द एक्सटर्नल सॉल्यूशन कैन एक्युमुलेट इन द फ्री स्पेस वेयर एज एनाइंस आर रिपेल्ड। अब यहाँ पे जो एनाइंस हैं वो चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो सेल होते हैं, they cannot absorb on that. Plant species differ considerably in their cation exchange capacity, that is in the number of cation exchange sites। जो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं उसी हिसाब से उसकी जो एक्सचेंज कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट होती है इन डिफरेंट स्पीशीज। जब दूसरा जो है दैट इज पैसेज इनटू द साइटोप्लाज्म। Passage into the cytoplasm, despite some selectivity for cation binding in the cell wall, the main site of selectivity in the uptake of cations and anion as well as a solute in general is plasma membrane। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली ये सिलेक्टिविटी जो है वो करती है कि जित कौन से आयन को अंदर जाने देना है, कितनी अमाउंट में जाने देना है और कब जाने देना है। जो सेल वाल है जैसे मैंने कहा उसके बड़े पोर्स होते हैं, वहां पे रिलेटिवली ज्यादा जो है इजीली पास थ्रू हो जाता जी। अब जो है ये है पैसेज इनटू द साइटोप्लाज्म। जो स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर। ये जो आपको येलो नजर आ रही है दिस इज लिपिड बाइलेयर। जो स्मॉल स्मॉल पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल्स सो दे कैन आल्सो पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर।
क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं दे कैन नॉट पास थ्रू, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन जो आयंस हैं, चाहे वो स्मॉल हैं या बड़े हैं, आयंस तो वैसे स्मॉल ही होते हैं, तो दे आल्सो दे कैन नॉट पास थ्रू। अब ये देखें, ये आयंस हैं, ये इनसे बहुत छोटे हैं, बट दे कैन नॉट पास थ्रू, क्योंकि वो जो है वो जो लिपिड बायलेयर है उसकी एबिलिटी ही नहीं है कि वो उसको जाने दे उन आयंस को। तो इसलिए जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, बेसिकली ये एक फिल्टर भी है, दूसरा ये पैसेज भी प्रोवाइड करता है। अब आयंस दे कैन नॉट पास थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन, अमीनो एसिड दे कैन नॉट पास थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर कुछ मैकेनिज्म है कि वो उनको अंदर जाने देता है। तो दोज आर बेसिकली प्रोटीन। ये लिपिड बायलेयर के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड दीज आयंस and the larger molecules like sucrose, so they can pass through these proteins, and इन्हीं प्रोटीन को हम फिर बाद में लिपिड वो सॉरी ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं। लिपिड बायलेयर of the plasma membrane prevents the indiscriminate movement of ions and larger polar molecules from the apoplasm into the cytoplasm. As I mentioned in the previous slide, from the cytoplasm into the apoplasm, efflux जो है वो भी इसके जरिए हो सकता है, वहां से सेल के अंदर से बाहर भी आ सकती है। इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन फैसिलिटेट द सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब कुछ जो मॉलिक्यूल जा सकते हैं लिपिड बायलेयर से, वो अंदर भी चले जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन जो सिलेक्टिविटी है बेसिकली दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोटीन विच आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये बहुत किस्मों की। अगर आप ये सेल मेम्ब्रेन सॉरी प्लांट रूट्स की देखें एपिडर्मल सेल्स में, तो ये बेतहाशा किस्म की जो है ये प्रोटीन्स होती हैं विच आर बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स, और वो ट्रांसपोर्ट करती हैं आयंस इनटू द सेल। अगर ये ट्रांसपोर्टर ना हो तो सेल मेम्ब्रेन से ये आयंस मूव ही नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट the plasma membrane, they are basically the barrier, as well as they are also facilitator, because they have transport proteins which can transport ions and the bigger molecules. Then the nutrient entry into the same blast. अब ये दो तरह से होती है, जो पैसिव अपटेक है और एक है एक्टिव अपटेक। जो पैसिव अपटेक का मतलब है अपटेक अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, के दो किस्म के ग्रेडियंट है। लेट्स से कि ये आगे भी हम इसको पढ़ेंगे कि एक तो है चार्ज ग्रेडियंट, अगर बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है अंदर कम है, तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन है दे कैन पास थ्रू यूजिंग दैट इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। दूसरा ये है कि केमिकल ग्रेडियंट है, कि इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट तो बराबर है, लेकिन केमिकल ग्रेडियंट है वो पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको यूज करके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं आयंस, सो दैट इज कॉल्ड एज पैसिव अपटेक। बट एज वी हैव ऑलरेडी discussed in the previous slide के जो जो not previous one of the slide which we have discussed के जो सेल प्लांट रूट सेल है उसके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल सोल्यूशन। इट मींस जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ है। मीन जो एक्सटर्नल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो लो है और अंदर उसके हायर है, तो वो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। जो जो मूवमेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होगी उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो इन्हीं जो जो मैंने आपको कहा है कि ट्रांसपोर्टर उन्हीं के थ्रू होती है, और फॉर दैट एनर्जी यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. So that was all about today, and further we will discuss later on.